मैडम नाउ स्टार्ट कर दूं आपकी क्लास? कर दीजिए। थैंक यू। स्टार्ट हो गया मैडम आपकी क्लास ना? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। Good afternoon, everyone. So, in the last class, we discussed that how e-commerce is evolving and what is the history behind the e-commerce and how it has penetrated our lives. Today, we will be discussing upon its technical components, and then we will discuss that what all are the applications and what is the framework of e-commerce. So, let me go to my PPT. आपको मैंने एक लिंक दिया है चैट बॉक्स में. यू कैन एक्सेस माई PPTs देयर थ्रू द लिंक. अभी मैंने सिर्फ एक PPT अपलोड की है. जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे वहां पर और PPTs आ जाएंगी और ये लिंक सेम रहेगा, तो आप अभी सेव कर लीजिए कहीं पर भी और इसी लिंक के थ्रू आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा. Okay, now let me go back to my PPT. Last class में we discussed that what is the definition of e-commerce, what is the scope of e-commerce, discussed upon the timeline, the history and evolution. Then we also discussed that what is the difference between the e-commerce and e-business. E-commerce is just a part of e-business, and e-business activities involve other things as well, like how you are dealing with your suppliers, your distributors, your government, and other stakeholders. Then we discussed that what are the advantages of e-commerce. It is easy to set up, we have flexible hours there, and there are many other advantages. Then we also discussed upon the disadvantages, that sometimes we find it difficult to have a personal touch with the seller, and that is why there is a lack of trust. So these are the disadvantages of e-commerce. Today we will discuss that what is the need of e-commerce. So e-commerce basically helps in cost reduction. As we discussed in the last class, that you don't need to set up an infrastructure in order to have a business. Unlike the normal commerce where you need to have a building, you need to have a manufacturing unit, you need to have a showroom, etc. Here you don't need to have such things. You just need to have a laptop or a computer with you. You just need to have an internet connection and then you are ready to go. So that is how it helps in the cost reduction. Second, e-commerce helps in customer satisfaction. That means sometimes we are not able to penetrate to a larger market through the normal commerce. But when we are doing the e-commerce, we can have an access to a larger market and we can build a trust. For example, Amazon is not an Indian company, but still we rely upon Amazon for our day-to-day needs because we have created a kind of satisfaction for ourselves. That satisfaction is just because of their services they provide to their customers. They have good services, they deliver in time, even they have good policies like return and exchange policies. So that is why sometimes e-commerce helps in the customer satisfaction that is not otherwise provided by other sellers. E-commerce helps to acquire just-in-time information. Unlike the physical infrastructure, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप पर कोई आ रहा है, आपसे कोई सामान खरीद कर लेकर जा रहा है,
तो उसके बाद जब तक वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ जाता आपको उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, बिकॉज वो अच्छा लगा बुरा लगा, they do not have any platform to show their emotions related to your product. But when it comes to the e-commerce, you have an access to the information, and at the same time you can write your comments, your feedback and your reviews there on the site. So here they can acquire just in time information, like information बहुत जल्दी मिल जाती है आपको भी और जो सेलर है उसको भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Another example, suppose आपको शूज खरीदने हैं. अब शूज खरीदने के लिए अगर आप जाकर अलग अलग शोरूम में प्राइस पता करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर इतने का मिल रहा है वहां पर इतने का मिल रहा है, it will take a lot of time of yours and efforts and of course the energy. But अगर आप यही चीज e-commerce platforms पे कर रहे हैं, it will just take a minute and you can have a look over the shoes of same model on Flipkart, Amazon, and then you can easily compare them. So that is why here you have just-in-time information. Next point, e-commerce helps in transaction efficiency. When we are dealing in the offline mode, then there can be transactions where you would forget to take money or something like that. But when it comes to e-commerce and you are making the e-payment, it would be easier for you to have a track over your transactions. आप पिछले एक महीने एक साल के ट्रांजैक्शन इजीली जस्ट इन अ क्लिक निकाल सकते हैं, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कॉमर्स में. नेक्स्ट पॉइंट, ease of access to global market through e-commerce. अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो एक फिजिकल शॉप के थ्रू बेचना है, तो you cannot think of the global market. Do you really think people who are living in USA would come to your shop and purchase? It is just next to impossible. But here, if you do business through e-commerce channels, e-commerce platforms, then you can have an access to the global market, and people who are living in Mumbai, Kolkata, even in US, they can purchase your products. So that is how you can have an access to a broader market. So this is what emerges the need of e-commerce. Why there is a need of e-commerce? Because it helps in certain things. Now we'll discuss about the technical components of e-commerce. What all are the components? So what all are the terminologies involved in e-commerce? So first of all, we have the client or PC workstation. Who is a client or PC workstation? Suppose I'm doing a business or I am the customer. So whenever I am sending any request to the server, I become the client. Suppose you are searching for something over Google. अब Google पे आपने कोई वर्ड टाइप किया है, आपको उसका मीनिंग चाहिए, तो कैसे वो काम करता है? जैसे ही आप सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन में जाकर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, तो वो सीधा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि आप उसका मीनिंग दीजिए. रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट एक्सेस होती है, एंड देन इट गिव्स यू मेनी रिजल्ट्स. So a client is someone who is making request for an access. Second है सर्वर. अभी मैंने आपको पहली डेफिनेशन में सर्वर बताया, जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके रिजल्ट्स देता है. So client is making the request and server is fulfilling the request. Then we have transmission media. Transmission media is a kind of optical fiber or
या फिर अगर वायर के थ्रू कुछ चीज जुड़ी हुई है, तो जो चीज उस ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, सपोज दिस इज क्लाइंट, this is server, and how they are connected to each other would be known as the transmission media, because it is transferring the information or request from one place to another. Transmission media. Next, internet connection. Internet connection, you cannot have an access to server or any kind of information until and unless you have an internet connection. तो आपको इंटरनेट कनेक्शन वो लेना पड़ता है, ब्रॉडबैंड होता है या फिर आप फोन के हॉटस्पॉट के थ्रू करते हैं या कोई भी. सो दैट इज इंटरनेट कनेक्शन. आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस अपॉन इट मच. देन वी हैव इंट्रानेट. इंट्रानेट मीन्स it has two words, intra and net. Intranet is connecting many clients within a particular organization. Suppose हम SOL में हैं सब और हमारे कंप्यूटर्स या हमारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं. सपोज कोई इंफॉर्मेशन है जो वैसे अदरवाइज इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इंट्रानेट पे अवेलेबल है. यानी हमने एक लोकल नेटवर्क बना रखा है जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, और विद इन दैट नेटवर्क एनी इंफॉर्मेशन और अ काइंड ऑफ कोई भी तरीके की जानकारी उसमें फीड की गई है, तो उसका एक्सेस जो है वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को होगा. तो इफ वी बिलोंग टू SOL, देन ओनली वी कैन हैव एन एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन. बाहर का कोई भी कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता. इसी तरीके से कंपनीज में हमारे इंट्रानेट होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें फीड होती है और सिर्फ कंपनी के कंप्यूटर्स का ही एक्सेस होता है. Next is firewall. Firewall is just like the ordinary wall. अब wall का क्या काम होता है? It protects us from other threats. कोई unauthorized access ना हो हमारे कंप्यूटर पे. तो firewall आपको हेल्प करती है सिक्योरिटी में कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर या हैकर आपकी इंफॉर्मेशन पे एक्सेस ना कर पाए. Then we have the extranet. Extranet means when any information is provided to the third party. So suppose SOL जो है उसका इंट्रानेट है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कुछ, और वो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, तो हम एक्स्ट्रानेट को यूज करेंगे rather than यूजिंग द इंटरनेट. इंटरनेट में क्या होगा? पूरी वर्ल्ड वाइड लोगों का एक्सेस हो जाएगा. हम ये नहीं चाहते. हम ये चाहते हैं कि SOL का इंफॉर्मेशन पे एक्सेस है और वही इंफॉर्मेशन हम किसके साथ साझा कर पाए? हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ. तो हम एक एक्स्ट्रानेट क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और SOL का एक्सेस हो पाए उस इंफॉर्मेशन पर. नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. नाउ व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? Protocols is a set of rules and regulations. Rules and regulations हर काम को करने के कुछ rules होते हैं. For example, आप अगर किसी एक particular website को visit करना चाहते हैं, तो आपको अपने email ID देनी पड़ेगी या फिर अपना phone number देना पड़ेगा उसको access करने के लिए, क्योंकि उसकी protocol है ये. अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, it would not allow you to have an access. So that is why internet protocols are really important, and they form a set of rules you have to go through in order to have an access to a piece of information. Next है proxy servers. अब proxy क्या होती है? जब आप क्लास में आपका फ्रेंड प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बदले में प्रेजेंट मैम कह रहे हैं, दिस इज प्रॉक्सी. यहाँ पे भी प्रॉक्सी सर्वर का वही काम है. कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर्वर्स बहुत बिजी हो जाते हैं, वी गेट अ हाई डिमांड. आपने देखा होगा कभी कोई रिजल्ट आता है
या फिर कुछ इस तरीके की चीज होती है, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो उनके सर्वर बहुत बिजी हो जाते हैं। तो कभी कभी जब हमारे सर्वर्स पे बहुत ज्यादा लोड आता है तो वी क्रिएट अ प्रॉक्सी सर्वर, जो एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में रहकर काम करता है और कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर भी सेव होती है। तो आपकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक भेजने की बजाय वो सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर तक भेजता है, ताकि वो वहीं से फुलफिल हो जाए और सर्वर पे ज्यादा लोड ना आए। So proxy servers are established between the client and the server. Then we have the Bastion host. Bastion host means it is a kind of gateway. Gateway क्या होता है? That allows people to come and go. Gate की तरह होता है। So यहाँ पर भी Bastion host का क्या काम है? It allows an access to a particular website. It is a gateway. You have to go through the gate in order to have an access to that particular piece of information. Suppose if you do not have authorization to go there, then the Bastion host would reply कि आपको वहां पर जाने की कोई भी एक्सेस नहीं है या आपको परमिशन नहीं है। तो जब आपके पास एरर्स आ जाते हैं, आप कोई वेबसाइट देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं है, तो इट रिवर्ट्स दैट ओके इट इज एन एरर एंड यू डू नॉट हैव परमिशन टू गो देयर। सो दैट इज Bastion host. Next is transaction server. Transaction server is a type of server that allows you to do a transaction. So suppose you are transferring money to someone, या फिर अपने बैंक से पैसे निकालने हैं आपको, या फिर एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करने हैं। सो जो ट्रांजैक्शन है, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है, उसके बदले में पैसे देने हैं। सो जो ये ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन सर्वर करेगा, जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखता है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन it allows you to do a transaction. Next is database server. It is also a type of server जहां पर आप इंफॉर्मेशन को फीड करके रखते हैं। Like we have Google, we have Yahoo, we have different search engines. तो वो सारे जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं? डेटाबेस सर्वर से, because a lot of data has been fed into their server. That is known as the database server. And the last thing is router. Router is that allows you to make a route. For example, you have to search a particular information over your laptop. तो अब जब आपने लैपटॉप पे कोई वर्ड टाइप किया है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली गूगल के पास उसके रिजल्ट्स हों। तो वो क्या करेगा, गूगल एग्जैक्ट रिजल्ट ना देके आपको एक लिंक दे देगा, फिर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे एक और लिंक मिल जाएगा जिसमें आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन वो गूगल के पास था नहीं, इसीलिए आपको इनडायरेक्टली भेजा गया है। So router helps you to make your route to a particular piece of information. तो router आपको help करेगा कि आपको किन किन चीजों पे क्लिक करके यहाँ तक पहुँचना है। So these are some of the technical components of e-commerce. And before going for the further discussion, we should have the knowledge about these terms, because ये terms जो है वो बार-बार use होती हैं, proxy server है, protocols हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसका काम क्या है। I hope it is clear. Okay, so now we'll discuss what are the different models of e-commerce. E-commerce business models. Here we have given 8 models. Earlier we used to have only 4 models. Those were B2B, B2C, C2C and C2B. You all must be aware of them.
But now we have come up with a few more models which are there in place, and let me discuss about them one by one. So firstly, we will discuss upon the basic models. B2B model stands for business to business. So when Amazon is transacting with other sellers who are selling their products over Amazon, this transaction would be known as B2B because the customer is not involved, only the two businesses. Amazon is also doing business, and the sellers who are selling on the Amazon platform, they are also doing the business. So when they are transacting with each other, it means that there is a transaction between businesses. Then next is B2C. When the seller is selling something to me, I'm a customer, I'm purchasing a product, or I'm accessing to a service. So I am doing it just for the purpose of consumption. I do not have any intention to resell it. That means there is a transaction between the business and the customer. And customer is the ultimate consumer of the product. This is the second model we usually see. The third model is C2C. Now the business is not involved. For example, OLX. On OLX, we have different customers dealing with each other. None of them is doing business. Suppose I want to sell an old bicycle. So that old bicycle is not a part of my business. I do not have a business of selling bicycles, no. But I just had an old bicycle and it is of no use for me, and that is why I am selling it to the OLX. So this kind of model would be known as the customer to customer. And the last is C2B. C2B is customer to business. So when you are giving money to the business because you have purchased something, so in return you have to make a payment. So that payment would come under the purview of C2B. So when anything is going from customer to business, it can be the piece of information when you are giving details about your address, your email ID, your phone number. So when anything is going from a customer to the business, this model is C2B. Now let's talk about the new business models. These business models are B2E, G2C, C2G, and B2G. That means here we have the business to employees, government to customer, customer to government, and business to government models. Now let's discuss upon them. Business to employees means when you are providing any information, stocks, etc. to your employees. Here you are not dealing with the customers, but you are providing something to your employees. This model is known as B2E. Sometimes businesses provide the information related to the profits of the business, their stock options, their recognitions, etc. So that is business to employees model. Next, we have the government to customer model. So when any information is provided by the government to the customer, for example, these days everything has been automatized. You can have an access to the governmental information like electoral rolls, your if you have gone for a category certificate or income certificate, everything is available online. Every service is there available on their portals. So how these services are being provided to customers would be known as the government to C model, the government to customer model. Then we have customer to government model. Now how the information is given to government? Sometimes we go for the surveys. Government कुछ surveys
निकालती है जिसमें कस्टमर्स को यानी जनरल पब्लिक को वो फिल करना होता है सर्वे। या फिर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न को फाइल करते हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। सो दिस मॉडल इज नोन एज द C to G model, that is customer to government model. And then lastly, we have the B to G model. So whenever the businesses are providing information to government about their profits, about their taxes, about their social responsibility, they provide information to the government, and it is known as the business to government model. So these 8 models are there in e-commerce. Just have a look over them. Okay, so now we will discuss some of the types of e-commerce businesses. Firstly, we will discuss the online storefront. ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एक ई कॉमर्स बिजनेस का टाइप है जिसमें जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही होती है ऑफलाइन भी, उन्हीं की एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पर जाकर आप उन चीजों को खरीद सकते हैं। For example, if you want to purchase Nike shoes, so these Nike shoes are readily available in their showrooms. But if you don't want to visit the showroom, you can go for their another model where they have their specific online store. You can just write Nike.com and you would be redirected to their online storefront, and there you can purchase Nike shoes and they would be delivered to your home. Online storefront मैं आपको दिखा देती हूँ how it looks like.
sorry. I hope it is clear. It is online storefront where you can find shoes and other accessories offered by Nike, and you can purchase from them directly. There is no intermediary involved. Okay, you are purchasing directly from the Nike showroom. This is online storefront. Next we have the drop shipping. As the name suggests, here you are just dropping something, you are purchasing from someone and dropping it to any other person. For example, if Amazon is maintaining its inventory, so suppose Amazon किसी और शॉप से या किसी और मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता है और अपने नाम के अंडर उसे बेचता है. It is known as drop shipping because they are neither producing it nor manufacturing it. They are just purchasing the article from anybody else and providing the same thing to the customer. This is drop shipping model. Next e-commerce business model is affiliate e-commerce. Affiliate e-commerce means when somebody else is selling a particular product on the behalf of anybody else. For example, अगर मेरा कोई YouTube चैनल है, वहां पर मैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए लिंक बायो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका मतलब है दिस इज अ काइंड ऑफ एफिलिएट ई कॉमर्स, जहां पर आप किसी के बिहाफ पर वो सामान बेच रहे हैं. तो जैसे ही आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसका एक कमीशन जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो आजकल बहुत से लोग जो है Amazon के लिए एफिलिएट बने हुए हैं. वो जैसे मैंने काफी वीडियोस देखी हैं फिटनेस फ्रीक्स की, तो वो यूजुअली क्या करते हैं कि फिटनेस के लिए आपको कुछ रेसिपीज देते हैं और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं और बताते हैं कि दिस सप्लीमेंट इज रियली गुड एंड यू कैन डायरेक्टली परचेज दिस सप्लीमेंट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो. द टाइम यू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू मेक अ परचेज, an amount would be credited to their account as well. So they are performing as an affiliate for that particular product. Next, we have the membership or subscription model. Membership or subscription model is like we have the subscription of Amazon Prime. आप किसी चीज की एक मेंबरशिप ले लेते हैं या उस सर्विस को सब्सक्राइब कर लेते हैं फॉर 1 month, फॉर 3 months और फॉर 1 year और फॉर लाइफ टाइम. जैसे YouTube में भी आपको मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखनी पड़ती. आप डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. तो जिस चीज में आपको सर्विसेज दी जाती हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू पे सम मनी. फॉर एग्जाम्पल Amazon Prime. If you are a member of Amazon Prime, you can have many benefits. For example, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डिलीवरी दी जाएगी. There would not be any delivery charges. You have an access to the Prime videos and Prime music. So that is how you can become a member and you can have an access to their services. This is also one model that is being followed by e-commerce platforms. Now we have next model, that is e-marketplace. E-marketplace is
जस्ट लाइक अ नॉर्मल मार्केट प्लेस जहां पर आप चीजें जाकर अलग अलग सेलर्स होते हैं एंड यू कैन जस्ट गो एंड परचेज फ्रॉम देम. So the best example can be Amazon, Flipkart, Myntra and other such kind of channels where other sellers are involved. It is just connecting you and a seller. It is just a platform. Platform अपनी तरफ से हाँ Amazon कुछ चीजें अपनी तरफ से बेचता है लेकिन there would be many sellers also. So जहाँ पे हम एक platform पर sellers और buyers को लाकर मिला दें, that is known as e-marketplace. And finally we have e-services. E-services means you have certain services available in electronic form or the physical services are also being booked in the electronic form. For example, we have the services of Ola and Uber. अब Ola and Uber की services तो आपको physically मिल रही हैं, कार physically आकर आपको लेकर जाएगी, लेकिन उसकी जो booking है, उसकी payment है, everything is being done online. So this is also a model where you provide a service. That service can be online or offline. अभी कैब सर्विस है वो ऑफलाइन है. आपको अगर कोई कंसल्टेशन सर्विस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टो की बात करूं तो प्रैक्टो में आपको सर्विस दी जा रही है लेकिन वो भी ऑनलाइन डिलीवर की जा रही है. तो कुछ सर्विसेज जो है वो ऑफलाइन डिलीवर की जाती हैं, कुछ ऑनलाइन डिलीवर की जाती हैं. But when a service is being delivered using any electronic platform or it is being booked using an electronic form is known as the e-service platform. So marketplace और services में यही difference है. E-marketplace में आपको products मिलेंगे, e-services में आपको services मिलेंगे. Just have a look over there. Now we have some other classifications as well. For example, we have the brokerage model. Brokerage model means here you are acting like an intermediary. Intermediary means you are getting information or services from one place and transferring it to the another place. For example, PayPal क्या करता है? उनके पास अपना कोई बैंक नहीं है. It just allows you to make a transaction, and here different parties are involved, like the bank of the receiver, the bank of the giver. Okay, and they both are involved in a transaction and PayPal is just facilitating them. So a brokerage model is something where a company facilitates your transaction and they just work upon the commission basis. Next, is the advertising model. Now advertising model, here you are not selling anything, but you are making money from the advertisements or advertisers. For example, whenever we search anything over Google, it does not ask for the money. Advertisement के जरिए ही पैसा कमा रहे हैं Google. अब आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दी जाती है? So
there is one rule of business. When something is being provided you for the free, just think that you are the product. कोई चीज आपको जब फ्री में दी जा रही है, then that product does not worth it. You are the product. So आपको जब कोई piece of information फ्री में दिया जा रहा है, that means they want something else from you. They want to show the advertisements so that you can be attracted to them. So whenever you search something over Google, there would be many advertisements and they are making money from the advertisers. This is advertisement model. Next we have the intermediary model. Intermediary मतलब क्या होता है कि आपको information provide की जाती है. Like Wikipedia. Wikipedia, how it works? It is free of cost. You can search anything on the Wikipedia. But then how it works and how it creates its database. It is a kind of intermediary where people can go and add on to the information. Next is the merchant model. Merchant model means where you are just allowing people to sell something to the customers. For example, Amazon. Here Amazon is working on both the models. एक तो brokerage model भी है जिसमें दो कुछ sellers हैं, कुछ customers हैं और वो दोनों आपस में transact कर रहे हैं over that platform. At the same time, they are also having their own products. So that is why it is known as the merchant model. Next we have the manufacturer. Manufacturer में आप Amazon भी ले सकते हैं because they are also manufacturing some of the products जो Amazon के खुद के products हैं. Another example can be Dell. Dell, अगर आप Dell की वेबसाइट पे जाते हैं, it is just online storefront. तो जो खुद ही manufacture करके खुद ही बेच रहा है, this model is known as the manufactured model. Next is the virtual community. Virtual community means when you are involved in a conversation with others. Normal communities में क्या होता है, आप कहीं जाकर बैठ गए, आपने बात की, अपने विचारों का आदान प्रदान किया. Similarly, we have virtual communities when you become a part of that community. For example, आजकल कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे चल रहे हैं, like we have R. अब R में हमारी एक कम्युनिटी होती है जिसमें लोग कोड्स बना के खुद उसमें अपलोड करते हैं and they communicate to each other and they work together in developing some of the codes together. तो इस तरीके की कुछ कम्युनिटीज होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड वो सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के लिए होती हैं. नेक्स्ट वी हैव द सब्सक्रिप्शन मॉडल. I have already discussed, जैसे Netflix का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, Amazon का ले लिया, Disney Hotstar का ले लिया and so on. And last we have the utility services. So जो ये internet service providers होते हैं या application service providers होते हैं, वो आपको services देते हैं जो वर्चुअल सर्विसेज होती हैं. इंटरनेट को आप देख नहीं सकते, एप्लीकेशन आपको कोई दिया आपको देख नहीं सकते, बट इट इज इन द सॉफ्ट फॉर्म, सो दैट इज नोन एज द यूटिलिटी. सो दीज आर सम अदर मॉडल्स दैट आर प्रिवेलिंग दीज डेज. Now you can ask questions if you have any. अच्छा, आपका शायद चैट बॉक्स अभी ऑन नहीं है. Let me try to switch it on. एक बार मैं SQL में कॉल करके उनको बोल देती हूँ.
Anand ji, are you there? हेलो हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैडम Q&A सेक्शन इसमें है, क्या? क्वेश्चन आंसर सेक्शन ना, क्वेश्चन आंसर का। हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर का नहीं आ रहा है अभी इसमें। मैम ये पर है ना शो Q&A, हाँ जी, इस पर क्लिक करेंगे ना तो इधर आ जाएगा मैम सारा। ठीक है, वो अभी हो रहा है, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ जी, आगे। ठीक है, थैंक यू। या स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक लिंक भेजा है, उस पर आपको पीपीटी मिल जाएगी। दोबारा लिंक मैंने भेज दिया है, मैं दोबारा पब्लिश कर देती हूँ। 1 मिनट, ये लीजिए। अब लिंक मिल गया है बच्चों आपको? अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो नेक्स्ट 10 मिनट्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ये कल की और आज की पीपीटी है, इस पे आप लिंक जाके एक बार देखिए। आर यू एबल टू ओपन द लिंक? मीनवाइल पे आपको बुक दिखा देती हूँ जो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, मुझे बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बुक खरीदनी है आपको। इज इट विजिबल? ये Amazon पे भी अवेलेबल है।
नेम है डॉक्टर सुशीला मदान की बुक है, ई कॉमर्स टाइटल है और ऑथर्स नेम इज डॉक्टर सुशीला मदान। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आप बस कोई चीज खरीद के आगे किसी और को बेच रहे हैं, ना आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी और से खरीद कर आगे बेच रहे हैं थोड़े से मार्जिन पे, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ई मार्केट प्लेस का मतलब है जहां पर आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कुछ सेलर्स वहां पर होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं और वो आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं, आपका कोई रोल नहीं है, बस आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? पैशन होस्ट का मतलब है एक गेटवे होता है जो सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही एंट्री देता है। तो किसी भी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपके पास ऑथराइज्ड एंट्री होनी चाहिए, अदरवाइज एक एरर आ जाएगा, तो वो पैशन होस्ट का काम होता है। पीपीटी आपको भेजती है, नोट्स हमारी पीडीएफ फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर लेने हैं आपको नोट्स, एक सेकेंड। ये देखिए आप, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नोट्स रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होगा। यूजी स्टडी मटेरियल में जाना है आपको, फिर बीकॉम सेमेस्टर 4, ये देखिए ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स का आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर, ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सारे यूनिट्स हैं और ऊपर कंटेंट यहाँ से 190 पेजेस का आपके पास पूरे नोट्स हैं। तो ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी है और बीए प्रोग्राम के लिए भी है, बिकॉज ऑलमोस्ट यूनिट्स सेम है। अब आपके पास नोट्स भी आपको पता चल गया है कहाँ से लेने हैं, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, पीपीटीज में आपको दे ही रही हूँ। उसके अलावा भी आपको कोई बुक रेफर करनी है तो मैंने आपको ये बुक बता दी है, ई कॉमर्स बाय डॉक्टर सुशीला मदान। एनीथिंग एल्स? एक्स्ट्रानेट एंड इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अवेलेबल होती है, वो होता है इंट्रानेट। और एक्स्ट्रानेट होता है जब आप वही इंफॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी के साथ साझा करते हैं, वो एक्स्ट्रानेट बन जाता है। क्लाइंट एंड पीसी वर्कस्टेशन, जो भी रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, मैंने आज अपने लैपटॉप से इस पे कुछ सर्च किया है तो मैं एक क्लाइंट कहलाऊंगी और जहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो सर्वर कहलाएगा।
फायरवॉल मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मल दीवारों का काम होता है, फायरवॉल का भी वही काम होता है, आपको बाहर के किसी थ्रेट से बचाता है वो। तो एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा लीजिए जो आपको वायरस से या कोई हैक ना कर ले आपकी वेबसाइट, उनसे बचाता है। मेंबरशिप मॉडल, जिसमें आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आप उसके मेंबर बन जाते हैं। जैसे आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको कुछ ज्यादा सर्विसेज मिलती हैं। टेन ईयर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन 10 ईयर्स के जो आंसर्स होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं, तो आप क्वेश्चन उसमें से देख लीजिए, आंसर बुक में से देख लीजिए। कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। What is Netflix? Netflix is a video streaming channel that allows you to have an access to content, movies, TV shows, etc. जैसे डिज्नी हॉटस्टार है या फिर आपका Amazon प्राइम है। So I think that's enough for today. मैंने दोबारा मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। लिंक मैंने यहाँ अनाउंसमेंट क्रिएट की है, इस लिंक पर जाकर आपको आज की और कल की पीपीटी मिल जाएगी, जो एक ही पीपीटी है, थोड़ी हमने कल कवर की थी, थोड़ी हमने आज की। Okay, that's all for today. See you in the next class. Bye bye. Take care.